How's it going, buds and beauties? Welcome to Life of Naman. Today in this video, I'm gonna take a look at the Buds S1 from Truke. Now these buds are so much requested from my viewers that they are asking for what to go with. I have a choice. Shall I go for Truke Buds S1? So I finally went ahead and purchased them from Amazon for $14.99. And of course, it's a new category that these buds fall in, as well as the past earbuds that I reviewed, Mivi Duo Pods A25, under 1500 rupees. Duo Pods were for 1200 rupees. These are for exactly like $14.99. So they come under for 1500 rupees category. Now, as I said, I'm gonna do the unboxing pretty quick in my impressions video. So there you go with the unboxing. These are all the items that come in the box. A Type-C charging cable, a user manual, a warranty card, 2 pair of ear tips, and the Truke Buds S1 itself. That's all you get inside the box. Now moving on to the charging case and the Buds S1. Now I have 2 pair of earbuds or 2 pair of TWS earbuds with me, that is 701 ANC and the Mivi Duo Pods A25. These 3 earbuds, the Mivi, the Truke and the Port ones, they all look the same. I mean they look exactly like the Apple AirPods Pro. The design is exactly like that, but they keep varying in some forms or the another, and of course they are by 3 different companies. But one major thing that I will mention here is that the Truke Buds S1 has the greatest fit of them all. I was like shocked by the fit of the Truke Buds S1. After seeing them for the first time, I just simply thought that they're gonna be just like the Mivi Duo Pods or the 701 ANC. Now if I rank them by fit, I would say Truke Buds just leads the way by miles. Number 1 has to be given to Truke Buds S1. It's one of the favorite fits that I've seen in TWS earbuds, and fun fact, they don't fall out if I do a quick shake test. Another fun fact, I used Truke Buds S1 when I was working out and I was doing jumping jacks. So jumping jacks is this kind of activity, and I was doing jumping jacks pretty hard. Like I was moving my hands totally up and then totally down, so the buds could have fallen down, but they haven't. I have tried it with Buds 441 Pro as well, and 441 Pro does fall out. Even in high knees they fall out. But it was really fun to see that these earbuds from 3 different, like very different companies, they look really same. Pairing with my smartphone OnePlus 7 was pretty easy, but you have to get the buds out of the case because they don't get paired just sitting in the case, so you have to get them out, and the left earbud will pair with the right one first, and then it will show in the available list in the Bluetooth, and then you have to just tap on it and it will get paired to your smartphone. Now मेन जो चीज़ें होती हैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस में यही होती हैं कि साउंड क्वालिटी, fit, and if they fall you do a quick shake or not. ये 3 चीज़ें कॉमन होती है मेरी फर्स्ट इंप्रेशंस में. ना मैं कॉलिंग देखता हूँ, हाउ कैन यू नो इन द फर्स्ट डे ऑफ यूसेज और सेकेंड डे ऑफ यूसेज की कॉल क्वालिटी अच्छी है कि नहीं. 3 चीज़ें मैं देखता हूँ, तीनों चीज़ों में दे स्टैंड 10 on 10. मतलब हद ही हो गई. पिछले इतने महीनों से मैं रिव्यू कर रहा हूँ TWS, 1500 के अंदर ये एयरबड्स आर किलिंग इट. मतलब मज़ेदार, मज़ा आ गया. अब आई डोंट हैव मोर वर्ड्स देन दैट. अगर अभी किसी को लेने हैं 2000 के अंदर तो Truke Buds S1 ज़रूर खरीदे. अगेन 7 days इज़ वॉट आई वेट फॉर. पूरा 7 दिन रिव्यू करूँगा, बैटरी, कॉलिंग, लेटेंसी सब टेस्ट करूँगा, एंड आई विल शो यू आफ्टर 7 days ऑफ यूजिंग देम कि आर दे वर्थ बाइंग अंडर 1500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, या जो भी आपका क्राइटेरिया है. फर्स्ट इंप्रेशंस के लिए अभी के लिए 10 on 10 ऑन साउंड क्वालिटी, फिट, शेक में गिरे नहीं, एंड इतना एग्रेसिव नहीं था शेक टेस्ट, बट स्टिल आई कैन फील कि ये बाकियों से काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ फिट. दे आर फिटिंग रियली वेल इन माई ईयर्स. मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि यार ऐसे गिर जाएंगे अगर मैं थोड़ा इधर जाऊंगा. या आई एम नॉट श्योर ऑन ट्रेडमिल एंड ऑल. रनिंग पे भी मैंने टेस्ट नहीं किया है तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बोलूँगा, बट अभी क्विक शेक टेस्ट में ये नहीं गिरे हैं.
I'm just blown apart by these. So मेरे चैनल पे जो लोग पूछ रहे हैं Truke Buds S1 के बारे में, yes, go for them, they're amazing. मैं हिल चुका हूँ इनकी क्वालिटी देखकर. अगेन जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट वीक इसका रिव्यू पक्का, लाइक 7 days आफ्टर मैं रिव्यू डाल दूंगा. आई एम जस्ट ब्लोन अपार्ट बाई दीज. एंड बहुत ऐसे कम एयरबड्स मुझे दिखते हैं जिससे मैं उनकी क्वालिटी में फर्स्ट इंप्रेशंस में ही ब्लोन अपार्ट हो जाता हूँ. अगेन 7 दिन के बाद पता लगेगा एग्जैक्टली कि ये एक्चुअली कैसे हैं. बैटरी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो कि मैं एक्सप्लेन प्रॉपर करूँगा कि इसकी बैटरी कैसी है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, और मैं और डिस्कस भी नहीं करूँगा इस फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I'm gonna meet you in the next video. Next video probably Truke Buds S1 और MIUI duopods के comparison की हो सकती है, but I'm not sure. Just stay tuned to my channel. If you haven't subscribed to my channel, do it right now. Peace out, bye bye, and keep washing your hands, bro.